Hello everyone. This video is based on the poem I Know Why the Caged Bird Sings, written by Maya Angelou. Margaret Annie Johnson, who is popularly known as Maya Angelou, was a civil rights activist. She was quite famous for her unique autobiographical writing style. She has written series of 7 autobiographies that focus on her childhood and early adult experiences. The poem I Know Why the Caged Bird Sings particularly tells us of her life up to the age of 17, and this is a poem which got international recognition. So before starting with the poem itself, let's firstly talk about the prevalent themes in the poem. Firstly, there is the theme of belongingness, self-acceptance, about racism. She tries to give voice to the inequality between the whites and the blacks because she was in the favor of the blacks. She herself was a black and उसने अपने खुद के experiences से बताया है कि blacks के साथ क्या कुछ हुआ है. So in order to tell us, in order to give voice to the black, she took up this poem, she wrote this poem, and she presented the oppression of the blacks in contrast with the freedom of the whites. इन दोनों का कंपैरिजन बताने के लिए इस पोएम में she took up two birds. One is the free bird and the another one is the caged bird. जब हम stanzas करेंगे तो आप देखोगे एक stanza is completely devoted to the free bird, next stanza is devoted to the caged bird. So free bird, symbolic of the white people. Starting with the poem itself now, she says, a free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends, and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. Free bird के बारे में बता रहे हैं कि free bird, it is just leaping high in the wind. It floats downstream. कभी ऊपर जा रहा है bird, कभी नीचे आ रहा है. It floats downstream till the current ends. कि जब तक उसे अपनी इस flight में कोई problem नहीं आती, जब तक वो उड़ रहा है उसे कोई problem नहीं आती, it continues to fly. Till the current ends मतलब if there is any hurdle then only it stops, otherwise it is all free to fly. And dips his wing in the orange sun rays. कहता कि उसके जो wings हैं मतलब वो इतनी दूर तक उड़ रहा है कि it can dip his wings in the orange sun rays कि बिल्कुल स्काई में इतनी दूर तक उड़ रहा है कि ये सन तक को टच कर रहा है and dares to claim the sky. और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो बता रहा है कि ये पूरा स्काई मेरा ही है, क्योंकि एक फ्री बर्ड के लिए कोई फाउंडेशन नहीं है कि उसने कहाँ तक जाना है. It can start from anywhere, it can go away to the sky as far as possible. There is no end to it. And now in this stanza, she talks about the caged bird. She says, but a bird that stalks down his narrow cage. A bird जिसको कि narrow cage में बंद किया गया है, but stalks down the narrow cage, can seldom see through the bars of reach. कहता कि जो केज्ड बर्ड है, आपने केज कभी भी देखी होगी, पिंजरा कैसा होता है, पिंजरे में कैसे एक छोटी सी स्पेस में आपने किसी चीज को रखा हुआ है और बार्स हैं, वो लोहे की तारें लगी हुई हैं जिसके थ्रू वो सिर्फ सी थ्रू कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता. इट हैज टू बी कन्फाइंड इन दैट केज ओनली. सो ही सेज दैट बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, stalks down the narrow cage, it is symbolic of the oppression. It is symbolic of the frustration that a caged bird is going through. क्यों? क्योंकि वो जो bird है इसमें जो connotations हैं, stalks down word use किया है, it has connotations of anger and frustration. क्यों? क्योंकि एक caged bird है वो अपने cage के अलावा कहीं और नहीं देख सकता. It has to see through those bars इन द केज. सिर्फ अपनी वो जो थोड़ी थोड़ी जगह है उन बार्स में सिर्फ वहां से देख सकता है और कुछ नहीं देख सकता. इट कैन नॉट सी वॉट द फ्री बर्ड इज डूइंग, इट डू नॉट नो एनीथिंग. ही सेज बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज. Why he used the word rage? Because it shows the frustration and the anger that that bird is having. क्यों? क्योंकि birds को भगवान ने क्या बनाया है? God has given it wings. तो विंग्स किसके लिए है कि उड़ो, उड़ान भरो. पर हम लोग क्या करते हैं, उन्हें केज में बंद करके रख लेते हैं, which is absolutely wrong. So he is telling us that but a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. आगे देखो, his wings are clipped.
and his feet are tied. अब जिन्होंने भी बर्ड्स रखे होते हैं क्या करते हैं, उनके विंग्स को हमेशा क्लिप करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं, काट देते हैं या बंद करके रखते हैं. एंड हिज फीट आर टाइड, और उनके पैरों को बांध दिया जाता है ताकि वो ज्यादा दूर तक उड़ ना सकें, भाग ना सकें. सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग. क्या कह रहा है पोई कि अब उसके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ एक उसका गला है जो आपने नहीं बांधा हुआ, बाकी उसके विंग्स को क्लिप किया गया है, उसके फीट को टाई किया हुआ है. कहीं वो उड़ नहीं सकता, कहीं वो चल नहीं सकता, कहीं वो भाग नहीं सकता. इट हैज टू स्टे इन द cage only, and it has only one thing that is with them, that is to open their throat to sing. Similar is the case with the black people. They were being confined in certain things. The poetess says that, the poetess says so, that they are being confined in certain things due to which they cannot do anything, though they can voice their things out, but that is also not being heard by the other side. So now in this stanza, she says that, again talking about the caged bird sings with the fearful trill of the things unknown, but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. अब वो क्या कह रही है, Maya Angelou? She says the caged bird sings with a fearful trill. Caged bird गा रहा है, वो कहते हैं उसकी आवाज, क्योंकि उसने पहले बताया ना, only throat is open and it can only sing. So what it is singing? The caged bird sings with a fearful trill. पहले तो it has a certain fear in the voice, and it is talking of what? The things which are unknown to it. अब caged bird है, उसे पता भी नहीं वो क्या गा रहा है. She is also hinting at the blacks, the black poets also. She says that वो लिख तो रहे हैं poems, they do not know that what they are writing, even if their voice will be heard by the masses or not. They are not aware of this, but still, but longed for still, but they are still longing that they might be heard, they might get freedom, they might be given the equal opportunities as the whites. So she says, the caged bird sings with a fearful trill of the things unknown. What it is singing, the caged bird? उसे भी नहीं पता वो क्या गा रहा है, but longed for still. But फिर भी वो गा रहा है, and it is still longing for something. फिर भी वो wish कर रहा है किसी चीज के लिए. His tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. अब लास्ट में उसने बता दिया कि किसके लिए गा रहा है, ऑफ फ्रीडम. क्या गाना है, क्या गा रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? It is asking for freedom. It wants to be free. उसकी जो आवाज है वो कहते दूर distant hills तक सुनाई दे रही है. It is speaking aloud. It is trying that people should hear it and should make it free. Similar is the case with the blacks. Since they are being not treated equally, that is why Maya Angelou, she talked about the caged bird, talking about the black people. Now next she says the free bird thinks, फिर से अब से free bird की बात हो रही है. She says the free bird thinks of another breeze. अभी जो हवा चल रही है वो कहते हैं उसमें तो वो उड़ ही रहा है. अब उसके पास और क्या है free bird के लिए? It is thinking of the another breeze, and the trade wind soft through the sighing trees. So it is saying that a free bird thinks of another breeze. Why another breeze? Like it wants to have more freedom. Whatever it has, it wants to explore something more. The free bird thinks of a flight in a different direction. मतलब वो कहीं और अब उड़ना चाहता है, another breeze, कोई और हवा में जाना चाहता है. He says, and the trade wind softs. Now this reference of trade winds. What are trade winds? It is basically जो साउथ से ईस्ट की तरफ को विंड चलती है, दक्षिण से पूर्व की तरफ जो हवा चलती है, वो कहता वो जो हवा है, it softs through the sighing trees. अब यहाँ पे फिर से बेटा personification यूज की हुई है. अब वहां पे यहाँ वो क्या कह रहे हैं? He says the trade, the free bird thinks of another breeze. पहले तो it wants more freedom, that is why it wants to have another breeze. And the trade wind soft through the sighing trees. और जो trade wind, जो दक्षिण से पूर्व की तरफ हवा चल रही है, वो क्या कर रही है? जो trees हैं उन्हें it is giving a relief
to the trees. Sighing trees, अब sighing it is being given a personification of humans. जैसे human relax करते हैं तो they take a deep breath. तो similarly यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो trees हैं they are also taking a deep breath जब वो हवा उन्हें छू के जा रही है. And the fat worms waiting on the dawn bright lawn. अब ये जो फ्री बर्ड है वो कह रहा है कि मेरे लिए जो फैट वॉर्म्स हैं, जो मोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, वो कहता है मेरे लिए वेट कर रहे हैं इन द ब्राइट लॉन, कि लॉन में मेरे लिए वो भी पड़े हैं. एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन. मतलब देखो ना उसके पास क्या क्या है. पहले तो इट इज ऑलरेडी फ्री टू फ्लाई इन द स्काई. उसके बाद इट इज थिंकिंग ऑफ अनदर ब्रीज के जो है अब इससे अलावा और कोई. देन इट इज टेलिंग अस कि देखो जैसे ट्रेड विंड चल रही है वो कैसे पेड़ों को लहराती हुई रिलैक्स करती हुई जा रही है. इट इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज इट इज अ फ्री बर्ड. एंड the bird is also waiting for the fat worms. It is waiting for कि अब उसे और अच्छा खाने को मिलेगा, और अच्छी meals मिलेंगी. It is waiting for that. And ये सब देखते हुए वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दैट ही नेम्स द स्काई हिज ओन. उसके लिए क्या है, पूरा स्काई ही उसका है. जो कुछ उस कुदरत में है वो सब कुछ उस फ्री बर्ड को फ्री है. बिकॉज इट इज फ्री, इट कैन गो एनीवेयर, इट कैन ईट एनीथिंग, इट कैन एंजॉय द ब्रीज, इट कैन फ्लाई हाई, इट कैन डू ईच एंड everything. Now he says, but a caged bird stands on a grave of dreams. अब जो caged bird है, it is said to stand on the grave of dreams. Why grave of dreams? Grave of dreams because जितनी भी उस caged bird में hopes हैं, it is losing all the hopes, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सारी जिंदगी उसी cage में निकल जाएगी. The caged bird stands on a grave of dreams. It has dreams, but he knows that कि उसकी जो dreams हैं वो बिना fulfill हुए ही खत्म हो जाएंगी. It is on the end of everything. Grave of dreams मतलब उसे पता है कि till the time of death also he still have his dreams. He says his shadows shout on a nightmare screams. और इसी अपनी condition के कारण it shouts aloud. Because उसे ऐसे nightmares दिखाई देते हैं कि it shouts aloud, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कोई dreams पूरी नहीं होनी, उसे कभी free नहीं किया जाना. And because of that, to escape this thing, या इस चीज को किसी तरह से, since it has given up the hopes of freedom, that is why it screams aloud. So आगे वो क्या कह रहा है, his wings are clipped and his feet are tied, so his opens his throat to sing. तो फिर से वही वाली लाइन रेपिटेटिव है कि उसके विंग्स जो हैं वो क्लिप्ड हैं, उसके फीट जो हैं वो टाइट हैं, दैट इज व्हाई इट इज ओपनिंग हिज थ्रोट टू सिंग. आप पूरी पोएम में देखोगे यहाँ पे ह्यूमंस को पर्सोनिफाई किया है. मैंने पहले भी आपको बताया ब्लैक्स और वाइट्स को पर्सोनिफाई किया गया है. हर जगह वर्ड के लिए हिज प्रोनाउन का यूज किया गया है इन ऑर्डर टू गिव इट द क्वालिटीज, इन ऑर्डर टू एट्रीब्यूट द क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन. Now it says the caged bird sings. फिर से ये पूरा जो आपका ये stanza है, it is repetitive. First stanza and this stanza is same. The caged bird sings with the fearful trill of the things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. कि वो जो caged bird है, second stanza के साथ actual में ये मिलता है. तो caged bird है, वो गा रहा है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसके जो विंग्स है उसे बंद कर दिए गए हैं, उसके विंग्स को क्लिप कर दिया गया है, उसके फीट को टाइट कर दिया गया है. तो सिर्फ वो गा रहा है, किस चीज के बारे में गा रहा है, ऑफ द थिंग्स अननोन, ऐसी चीजें जो उसे भी नहीं पता, क्योंकि उसने फ्रीडम को कभी चख के देखा ही नहीं. दैट इज वाई इट इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम. पर उसे फिर भी नहीं पता कि व्हाट आर दोज थिंग्स, बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, पर फिर भी उसके मन में वो लॉन्गिंगनेस है, इट इज स्टिल लॉन्गिंग. एंड हिज tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. और ये जो caged bird है, it wants to escape this prison. वो इस prison से बाहर निकलना चाहता है. It is metaphorically used. It is used here as a metaphor by Maya Angelou.
who wants to tell that कि जो blacks हैं वो जो confined हैं politically, socially and जैसे उनके साथ treatment किया जाता है, it wants to go away from that cage. वो constraint से बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी उसी तरह की freedom को enjoy करना चाहते हैं जो कि whites enjoy करें, because they both are equal. So Maya Angelou is giving voice to the blacks. She wants to make others hear their voice. She wants others to understand that okay, they are also equal, they are also human, they should be given the equal rights. So पूरी पोएम में हमने क्या देखा कि जो caged bird है उसे सिंबलाइज किया गया है blacks के साथ, और जो free bird है उसे सिंबलाइज किया गया है whites के साथ. जो whites और blacks में आपस में जो blacks के साथ discrimination किया जाता है, so she is trying to hint on that. I hope it is clear to everyone. If you like it, kindly subscribe the channel and follow for more. Thank you.